So today we will solve problems on time, speed and distance related to the train questions. So the first question is, two trains of length 100 meter and 150 meter are running in the same direction at the speed of 50 km per hour and 70 km per hour. How long will the faster train take to cross the slower train? So basically हमें इस प्रॉब्लम में क्या करना है, जो दोनों ट्रेन्स की लेंथ दी है वो हमारा डिस्टेंस बन जाएगा और जो स्पीड दी गई है उससे हम रिलेटिव स्पीड फाइंड करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन विच रन्स फास्टर, how much time it will take to cross the slower train. So first we have to calculate the distance, which is equals to sum of length of both trains, 100 meter plus 150, which is equals to 250 meter, and after that we have to find the relative speed, which is equals to 70 minus 50, 20 kilometer per hour. And now the units are different, so we have to convert the speed into meter per second. For this we need to multiply it with 5 by 18. So the new, so 20 is equals to 5 by 18, which is approximately is equals to 5.56 meter per second. Now we have a speed and we have a distance, so we can simply calculate the time. So time is equals to distance upon speed, which is equals to 250 divided by 5.56, and the answer is around 45 seconds, approximate answer. So this is the problem number 1. So what approach we have to take to solve this problem? जब भी कोई भी ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम दिया हो, अगर ट्रेन वो दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड होगी सब्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ द ट्रेन स्पीड, एंड द जो डिस्टेंस होगा वो उन दोनों का लेंथ का सम होगा. अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया गया तो यही अप्रोच लगेगी उस प्रॉब्लम में, एंड वी विल फाइंड और कैलकुलेट द टाइम ईजिली because we record only distance and speed, and that we can calculate from the situations that is given in the question. So the another problem which is related to the train is, two trains are moving in the opposite direction at 60 km per hour and 90 km per hour. Their length are 120 meter and 180 meter. Find the time taken to cross each other. So basically ये प्रॉब्लम भी लास्ट प्रॉब्लम की तरह सेम ही है, बट what is the difference is, in this question the trains are coming in the opposite direction, not going in the same direction. So the relative speed becomes the addition of the both the speed of the train which is given, and distance remains the same, sum of the length of the both the trains. And if we know if we know the distance, if we know the speed, then we can easily calculate the time. So yeah, we will apply the same approach. Distance is equals to 120 meter plus 180 meter, which is equals to 300 meter. We calculate the distance. Now speed is equals to 60 kilometer per hour plus 90 kilometer per hour, which is equals to 150 kilometer per hour. The units are not same, so we need to convert kilometer per hour into meter per second. So for this we need to multiply it with 5 by 18. So which is approximately equal to 41.67 meter per second. Now we have a speed in meter per second, distance in meter. Now we can easily calculate the time taken by the train to cross each other. So the time is equals to distance
upon speed 300 upon 41.67, which is approximately equal to 7.2 seconds. The trick in these questions are, if the trains are going in the opposite direction, then we need to add the speed. If they are going in the same direction, then we need to subtract the speed. That's so. The next problem is, a train crosses a man in 10 seconds and a platform in 30 seconds. The length of platform is 240 मीटर. Find the speed of the train. So इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक ट्रेन जो है वो एक आदमी को 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है, और वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस कर रही है, और हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है. सो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया गया है. इसमें बेसिकली जैसे हमने पढ़ा है कि अगर कोई ट्रेन किसी पोल को जब मैन को क्रॉस करती है, तो जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वही डिस्टेंस बन जाता है, और स्पीड हमें नहीं दी गई है और टाइम दिया गया है. तो इससे हमारा एक इक्वेशन बन गया. और सेकेंडली प्लेटफॉर्म दिया गया है. अगर एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो उस जो डिस्टेंस रहता है वो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ बन जाता है, और स्पीड हमें नहीं दी गई लेकिन लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दिया गया. तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई, और दोनों इक्वेशन को कोरिलेट करके हम स्पीड फाइंड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो गिवन a train crosses a man in 10 seconds. So the distance होगा length of train हो जाएगा. इसको L सपोज कर लेते हैं, which is equals to speed into time. This is the equation first, and the second equation is platform को 30 सेकंड क्रॉस कर रही है. Then distance becomes platform length plus length of the train, which is equals to speed into time, and platform length is given, so 240 meter plus length is equals to 30 s. This is the equation second. Now we will put the value of equation 1 into equation second and calculate the value of s. 240 plus 10s is equals to 30s. 240 is equals to 20s, and s is equals to 240 divided by 20 is equals to 12 meter per second. So the speed of train is 12 meter per second. So the next question is, two trains start at the same time from opposite ends of a 600 meter platform and cross each other in 20 seconds. Their speeds are 54 km per hour and 72 km per hour, and we have to calculate the sum of their lengths. So इसमें हम क्या अप्रोच लगाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. जैसे हमें दिया गया ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट एंड्स. सो इसमें जो रिलेटिव स्पीड रहेगी वो सम ऑफ द बोथ स्पीड, दोनों स्पीड का सम करेंगे तो हमें रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी, क्योंकि ट्रेन जो स्टार्ट हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट हो रही है. एंड प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म. जब भी क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म लेंथ दिया हो, प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया हो, तो जो डिस्टेंस होता है वो सम जो ट्रेन का लेंथ होता है और प्लेटफॉर्म का लेंथ होता है वो हमारा टोटल डिस्टेंस बन जाता है. एंड टाइम हमको दिया गया है, तो हम इजीली लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड कर सकते हैं. सो जो टाइम दिया गया और प्लेटफॉर्म लेंथ दिया गया वो मीटर और सेकंड में दिया गया है. तो इसके लिए हमको स्पीड भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा. सो वी विल फाइंड द रिलेटिव स्पीड, which is equals to 54 plus 72, which is around 126 km per hour. Now we will convert this into meter per second by multiplying by 5 by 18. So
126 into 5 by 18, which is equals to 35, 81 का 7 का 35 meter per second. Now the speed in meter per second and time is given, and we can easily calculate the distance, which is the sum of the length of both the trains and platform length. So distance is equals to speed into time, where the distance है train 1 length, train 2 length plus platform length, which is equals to speed हमें दिया गया 35 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया गया 20 सेकेंड, which is equals to 700 meter. This is the total distance traveled by the train, and we have to calculate the sum of the length of both trains. We have to calculate this. We need to subtract the platform from this. So train 1 plus train 2 plus platform length is given, which is 600 meter. 600 meter is equal to 700 meter. So train 1 plus train 2 length आ जाएगा 700 minus 600, which is equals to 100 मीटर. सो दोनों ट्रेन की लेंथ का समय 100 मीटर, वही हमें क्वेश्चन में पूछा गया. सो बेसिकली अगर हमें कोई भी इस लेटर का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को चंक्स में डिवाइड करो, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो, और देखो कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है और हमें क्या चाहिए, उस हिसाब से अपना अप्रोच लगाओ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. जैसे इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया और ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट एंड है, तो हमें पता है अगर ट्रेन अपोजिट एंड से शुरू हो तो रिलेटिव स्पीड ऐड होती है. सिंपल हमें स्पीड मिल गया और उसको हमें कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में, एंड टाइम इज़ ऑलरेडी गिवन, सो वी कैन सिंपल ईजिली कैलकुलेट द डिस्टेंस. बट हियर द trick is platform is given. So whenever the platform is given in the question, we have to the distance will become the sum of the length of the train plus the platform length, and from this we will calculate the total distance traveled by the train, and to calculate the length of the train we need to subtract the platform length, and we got it 100 meters. So that's all in this problem. So the next question is, a train takes 8 seconds to cross a pole and 20 seconds to cross a platform. If the speed is 54 km per hour, find the length of the train and the length of the platform. So the question is very simple and easy. Just we need to apply the right approach. So we know that if a train cross a pole, then the length of the train become the distance. And if we know that distance is equal to speed into time, speed is given, time is given, so we can easily calculate the length of the train. In case of platform, the distance is equals to length of the train plus length of the platform, and the speed is given, time is given, so we can easily calculate the platform length also. So let's start. First we will need to convert speed into meter per second. So 54 into 5 by 18, which is equals to 315 meter per second. And now we got speed in meter per second. Now we will find the length of the train. So length of train is equals to distance is equals to speed into time. Distance is the length of train, which we will assume L. Speed we know that 15 meter per second, and time is given 8. So 85 40 120 meter. The length of the train is 120 meter. Now we have to calculate the length of the platform. So we know that if we are solving a platform, then the distance will become the train length plus platform length. So total distance
we can say that, which is equals to speed into time. टोटल डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ, और स्पीड इज़ गिवन विच इज़ 15 and time taken is 20 seconds, so which is equals to 300 meter. And we have to calculate the platform length, and we know that train length is 120 meter. 120 meter plus 300 meter, so the platform length is equals to 300 minus 120, which is 180 meter. The question is very simple, but just we need to apply the right approach. Every question is just a normal question. We need to just do the normal conversion from a higher unit to the lower unit, and then make some equation and solve the problem. So yeah, this is day 2 of uploading my video on speed, distance and time regarding the train problems. Thank you for watching, and share this video so that more and more people will get benefit from this video.